And now let's go ahead and work on the temperature monitoring system using the MLX90614 non-contact infrared temperature sensor. Connect the VCC and ground of the MLX9614 non-contact infrared temperature sensor to the 3.3 volt and ground pins, and similarly आप लोगों ने MLX9614 नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर के जो SDA और SCL पिंस हैं ये आप लोगों ने Firebeetle 2 बोर्ड के SDA और SCL पिंस के साथ कनेक्ट करने हैं। You will also need to install the DF Robot MLX9614 लाइब्रेरी। तो इसके लिए आप लोगों ने स्केच के मेन्यू में जाना है, फिर इंक्लूड लाइब्रेरी में एंड क्लिक ऑन द मैनेज लाइब्रेरीज। सर्च बॉक्स में लाइब्रेरी के नाम को पेस्ट कर दें और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया हुआ है। ये प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा इसलिए है क्योंकि मैंने टेम्परेचर वैल्यूज़ को जो है गेजेस पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो अगर आप लोग गेजेस यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों का प्रोग्राम जो है वो काफ़ी स्मॉल हो जाएगा। These are the pin definitions for the various controller boards और ये हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। तो आप लोगों ने सिंपली उस मॉड्यूल को अनकमेंट करना है जो आप लोगों के पास है। तो मेरे केस में मैंने इस लाइन को अनकमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट मैंने कुछ कलर्स और वेरिएबल्स को डिफाइन किया हुआ है और बाकी ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं these are used with the TFT display module to enable the display, set the orientation, fill the screen, set the text color, set the text size and so on। इसके बाद फिर हम डिजायर्ड एमिसिविटी करेक्शन कोएफिशिएंट को सेलेक्ट करते हैं। 0.91 इज़ फॉर द ह्यूमन स्किन क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की अपनी एमिसिविटी वैल्यू होती है और इसको मैंने ऑलरेडी गेटिंग स्टार्टेड वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है जो मैंने MLX9614 पे बनाई है। तो इन द लूप फंक्शन आप देख सकते हैं all these instructions are used to display the temperature values on the gauges। I have already uploaded this program and now let's watch the Firebeetle 2 ESP32 based temperature monitoring system in action। So my dear friends, आज के लिए बस इतना ही and I hope you liked today's episode. Like and share this video with your friends. See you in next episode and thanks for watching.